बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहू। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम लॉ टाइम विद R&A सिस्टर्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अपने साथी मेहमान इनका तारुफ़ मैं कराई देता हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरे कोलीग सोलिसिटर मिस्टर लकी। वेलकम टू दिस प्रोग्राम। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में हम आपके कानूनी मसाइल जो आपको दरपेश होते हैं या ऐसे सवालात जो गाहे बगाहे हमारी प्रैक्टिस में आते हैं, हम उन्हें आपके सामने लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत को आपके सामने लेकर आएँ जो कि आपके रोज़मर्रा मामूलात में या रोज़मर्रा कानूनी मामलात में आप हमसे मावनत हासिल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स को जितना मौका हम दे सकते हैं हम देंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो ख़वातीन और हज़रात हमें कॉल करते हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो कॉल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि इस कॉल को मुख्तसर भी रखें और उसका जब बात कर रहे हो तो वॉल्यूम भी बंद रखें। अभी हम शुरू करना ही चाहते हैं, तो पहली ये कॉल होगी, इन्हीं से बात करते हैं। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ लेस्टर से। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने किया हुआ था असाइलम लास्ट ईयर, तो मुझे रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया था। तो लेकिन अभी इन दिनों मैं समझ रही हूँ कि वो सेफ रिटर्न रिव्यू है। मुझे उससे मैं ये पूछना था कि क्या वो लोग भी शामिल हो गए जिनको लास्ट ईयर रिफ्यूजी स्टेटस मिला है, या जो अभी इस ईयर जो है वो 3 मार्च के बाद जिन लोग करेंगे जिनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलेगा वो उसमें शामिल होंगे, जो जिनको पहले मिल चुका है वो लोगों को भी उसमें वो शामिल करेंगे? आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने ये कहा कि आपको ऑलरेडी रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है, और ये कब मिला था? जी 2000 कब मिला ये आपको? ये 16 में 2016 में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है। और अब आप ये पूछ रही हैं कि क्या अगर कोई तब्दीली आती है कानून में किसी भी किस्म की, तो क्या आप पर वो लागू होगी या नहीं होगी? यही सवाल है ना आपका? और दूसरा जी यही सवाल मैं कह रही हूँ कि ये जो अभी इन्होंने कानून में ये की है सेफ रिव्यू रिटर्न वाली 5 साल के बाद, जब आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं, तो क्या ये इनका लॉ बन चुका है या बस अभी फिलहाल अभी बना नहीं है? मतलब मैं अगर आप इसको जनरलाइज करूं तो आपका सवाल तो यही बनता है ना कि अगर कानून में कोई तब्दीली आती है किसी किस्म की, तो क्या वो आप पर भी लागू होगी या नहीं होगी? ये सवाल है ना आपका, क्योंकि उसमें तो मुख्तलिफ तब्दीलियां और भी आ सकती हैं, बाद में भी आ सकती हैं, हो सकता है कुछ पहले भी हुई हो, है ना? ठीक है, आप ये प्रोग्राम देखते रहे, हम आपके इस सवाल को जरूर जवाब देंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया। Okay, before we were going to start with our question, I think let's answer this question first. Okay. She's a refugee, and the question she's asking is, obviously as a refugee she has been given a 5-year leave to remain. Yes. And the question she's asking is, if there is a change in laws, so will it affect her anyway? Because what she's referring is safe return review. Probably that's what she said. That is there any law? Well, or is it going to affect her? No, I don't think so. If the Secretary of State granted refugee status, then they must have been very satisfied that she qualifies as a refugee in this country. In other words, it's not going to be safe to return her to our country because there is a genuine fear of persecution if she's returned to her country. Therefore, even if changes come in the law, I'm not sure. I don't think it's going to be such that it will affect her refugee status in this country. So I don't think she should worry about that at all. After 5 years, she's supposed to make an application for settlements to remain in the country. So I don't think she should entertain any worries. फातिमा, जैसा आप सुन रही थी, मेरा अपना भी यही ख्याल है कि जब एक दफ़ा आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका है, तो ज़रा रेफ्यूजी स्टेटस जब किसी को दिया जाता है तो उसमें तमाम कानूनी तकाज़े पहले पूरे किए जाते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए सेटिस्फाई होना इस बात पर ज़रूरी है कि आप वाकई इसके लिए क्वालिफाई करते हैं।
तो ज़ाहिर है जब आप एक मैट्रिक के लिए क्वालिफाई करती हैं और तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली गई थी, तो हमारा नहीं ख्याल कि इससे आप अगर कोई ऐसा नया कानून बनता है तो उसका आप पर कोई असर होगा। आप अपना ये 5 साल मुकम्मल करें और इस 5 सालों के दौरान अलबत्ता आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप काम करें और आप अपने आप को बिल्कुल सही रखें ताकि आप कल कानून की किसी और गिरफ्त में ना आएँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अब एक और कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो। Lost that one. कॉल गालिबन कट गई है। तो आप कोशिश ये करें कि सॉरी फिर से कॉल है। हेलो हेलो जी, कॉल डिस्कनेक्ट हुई है। तो आप कोशिश करें कि आप हेलो 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 फिर से कोशिश कीजिए, आपकी कॉल कट गई। तो हम बात कर रहे थे फातिमा वाले केस की कि आप फातिमा कोशिश कीजिए कि जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें अपने आप को दुरुस्त रखें ताकि कोई आपके लिए मसला पैदा ना हो 5 साल के बाद। हेलो Hello, my name is Manisha. यस मनीषा। Yeah, this is for live. It is live. Yes, you are live. Yes. Yeah. Actually, can I speak Hindi? जी आप बात करें हिंदी में। हाँ, मैंने यहाँ 2005 में यहाँ आके एसाइलम एयरपोर्ट पे ही अप्लाई किया था और मैं रिफ्यूज हो गई थी और मुझे टेम्पररी एडमिशन दिया था इन लंदन में। फिर मैंने लॉयर करके अभी तक मैंने रिफ्यूज ही हो रही हूँ। अभी 13 साल खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन मुझे पता नहीं है आगे क्या करना है और मेरा पता नहीं है कुछ क्या होगा। आप मनीषा अकेली हैं या आपके साथ कोई और भी है? नहीं, अकेली हूँ मैं किसी ने मुझे हेल्प की है, उसके साथ रह रही हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 40 है, 40 है। और आपने 2005 से असाइलम किया हुआ है तो लगभग 12-13 साल आपको हो गए हैं ना? हाँ, 13 साल हो गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए ज़रा आपका असाइलम केस तो जो भी आपने किया था वो तो अब यकीनन ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन आपको 12-13 सालों में आपने कुछ किया है इस दौरान? कभी कोई काम किया है आपने या कोई और कोई एक्टिविटी आपकी ऐसी हो? लेकिन मुझे मेरे पास काम करने की परमिशन नहीं, मैं उस काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वॉलंटरी काम की बात कर रहा हूँ। जो आप वॉलंटरी काम करते हैं, कुछ आपने इस मुल्क में कुछ किया हो? हाँ, मैंने वॉलंटरी में टेंपल जाती हूँ और वहाँ पर ओल्ड पीपल की वहाँ हेल्प करती हूँ। ठीक है। यहाँ जो होता है ओल्ड हाउस के अंदर। ठीक है। और इसके अलावा कोई कोर्स आपने किया हो, कोई लैंग्वेज का कुछ ऐसा कभी? या मैंने मुझे इंटरेस्ट है ब्यूटी में, तो मैंने स्टडी किया था लेकिन इतना काम नहीं मिलता। तो आप कहाँ बेस्ड कहाँ पर हैं? मैं लंदन से बोल रही हूँ। अच्छा, लंदन से बात करें। चले हम कोशिश करते हैं। वैसे मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता भी दी हैं, लेकिन इसी मौजू पर हम थोड़ा सा और बात करेंगे। आपका वाला जो मौजू है, तो आप प्रोग्राम को सुनते रहें, ठीक है? तो अगर प्लीज, ठीक है, ओके, थैंक यू, कॉल करने का शुक्रिया। राइट, द लेडी इज इन दिस कंट्री सिंस 2005, failed asylum seeker. Almost 13 years now. So, any options for her? Because she called, now I want to assume that she made an asylum claim and the claim was refused. Yeah, she's a failed asylum seeker. You see, when it comes to asylum claims, it's a bit difficult to advise because we don't know what the claim was, the basis of the claim. We don't know if she went to court, if it was certified, if she had any judicial process after the decision was made by the Secretary of State. So sometimes it's a bit difficult for us to say this is what you need to do. But if she's been here since 2005, obviously, I think I heard you say 40 years. Is she 40 years old? Yeah, she's 40 years. She's 40 years old. So she's
she's above 25 years of age. Yeah. Therefore, if you want to consider leave to remain outside the rules, then you should be looking at least 20 years of residence in the United Kingdom. She hasn't done 20 years yet. So if she's able to prove that there are reasons why she cannot integrate in her home country, then there is a chance. Can I just transfer this Yes. call? Hello. Assalamualaikum. Salam. I just got a question to make on the program. Yeah, you are live. Load time? You are live. Okay. I just wanted to ask. I'm basically applying for my spouse visa shortly Okay. for extension, and the requirement for the English have changed recently. So will she be able? Will she qualify based on her previous IELTS score? She did ILS before. Yeah. I think most of those qualifications usually they have a period of 2 years span, but I've seen cases where the Secretary of State granted extension because the person got leave to remain as a spouse previously and they passed the English test, so they didn't have to do another one. They granted it without taking a further test. Okay. So can they use the same one for indefinite afterwards? No, I think she would need to take the life in the UK test and the English test. English test as well, although the score is quite good and it is above the required level. It doesn't. I don't think that would matter, to be honest. For her to be on the safe side, it would be best for her to take the English test and then the life in the UK. It's better. But not for the extension. She won't need it for the extension. It's just when they're applying for. Yes, I've seen cases where they granted without the English test for extension cases. So yes, I would advise that if she wants to take the extension, do the extension application, she could do that. But for her own peace of mind, if she's worried about it, then there is nothing stopping her from taking a test. Just keep the certificate by the corner. When she's sending the application off, she can enclose the certificate for her own peace of mind. Okay. Thanks very much. Thank you. Right. Thank you. Right. So with that lady, for the lady, I think Nasa, I think for the lady, she probably would struggle to prove that she is not able to integrate in to her own country if she is asked to return, and because she's past the age of 25, she does not qualify yet. She's not acquired 20 years residence in the United Kingdom, so the chances that she would get leave to remain is very, very slim. But there are other questions we would like to ask. The condition of her health, has she got other families here? What private life has she established here? You know, these are questions we would like to ask, which we can't do on this program. But if she's able to ring us within the week, probably we'll be able to advise her accordingly. That's fine. मनीषा, अगर आप ये प्रोग्राम देख रही हैं तो हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि चूँकि आपका केस ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें आपसे पूछनी हैं, और अगर हम कोई नई एप्लीकेशन करेंगे तो उसके लिए आपकी जो हिस्ट्री है या उस बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है. तो आप ऐसा करें कि आप प्रोग्राम के बाद इस नंबर पे फ़ोन कर सकती हैं, ये जो हमारे स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, या कल जैसे कि कल मंडे है तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ जो कि हमारे सामने काफ़ी देर से आता रहा है, और हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस पर कुछ थोड़ी सी बहस करें, लेकिन इसका मौका नहीं मिल रहा था कॉल्स की वजह से. अभी हम एक मौजू को डिस्कस करते हैं आपके सामने. वो मौजू है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा होते हैं उनके लिए नेचुरलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो आई एम गोइंग टू पुट दिस क्वेश्चन बिफोर माय फ्रेंड एंड विल डिस्कस ऑन दिस. द क्वेश्चन इज रिक्वायरमेंट फॉर नेचुरलाइजेशन for children born in the UK. Oh, thank you very much, Nasa. The position of the law is that for children who were born in the United Kingdom and have stayed in this country for 10 years, they are eligible to apply for naturalization to become British citizens. Now, the position is such that
many parents are concerned that they haven't been lawful residents in this country themselves. So for that reason, they are scared to put applications for their children who have retained, they've retained some residence status for 10 years in the United Kingdom. So it's not about the parents, it's about the child. So there are different forms, there are different routes through which you can acquire naturalization. And for such children, there is a provision for them, but then they need to prove that they have actually resided in this country for 10 years period. So how that is done is that you need to produce the birth certificate of that child. You need to also produce documents to show that that child has actually physically resided in this country. Now, because he's a child, the Secretary of State is not expecting you to produce too much documents in relation to work, employment and all that, because this is just a child. But then it is expected that you should produce evidence in relation to studies. In other words, that child has been going to school. You produce also evidence in relation to their medical records. So those two pieces of evidence will suffice to support the application. You can get a letter from the school where the child is attending. That letter should state the address of that child. It should also state the period the child attended at school. Usually it's going to be primary school at the age of 10. The child can also go to the GP to obtain a letter from the GP stating when that child was registered with the GP. Usually they are registered after birth, just a few weeks after birth. If you have, and I think you should have, the red book of that child, you can put the red book there as well. And for your own peace of mind, you can request the medical history and records, of that child from the GP. It's possible they may ask you to make a payment of £20, sometimes £50, so for them to print out the records for you. And once you put all these together, yes, an application can be submitted. Now, these are the requirements by law, but then the application cannot be submitted by the child, so it's going to be submitted by an adult person who could be the parents of the child or a legal guardian. So that person is supposed to fill the application forms on behalf of that child and sign on behalf of that child. Now, if the parent is not here for any reason, for example, there is a case I'm looking at the moment. The mother of this child is not here. The father is passed away a few years ago. The Secretary of State had to write to the legal guardian to obtain consent from the biological mother of this child, even though the biological mother is not in the country. So these are some of the requirements that you need to bear in mind when putting the application in. Now, this application is not just for children who don't have leave to remain. In other words, if you came here as a student or you came here without any lawful residence and you've had a child in this country who's been here for 10 years, that child probably may not have had visas for that period of time, for the 10-year period of time. But once the child has established that 10-year residence in this country, then that child is eligible to make an application. Now, there are some parts of the application form where they'll be asking you about good character and stuff like that. Obviously, this is a child, so it's not expected that as a child, that child would have any adverse records in terms of criminal records and all that. There is another confusion which we come across is people often think that they can apply for passport. That's what it's assumed, that once you qualify for 10 years, you can apply for passport. No, I think the child needs to naturalize first. Yeah. Now, sometimes people think that naturalization is the same as going to the post office to obtain a passport form. The passport form is free, and that application is just about, I think it's less than £60 or £45, I think, for children. Now, you can't do that application without naturalizing just first. Take this call. That's fine. Hello. वालेकुम जी, अभी जो आपने टॉपिक है ना, मेरा क्वेश्चन इसके डालने में था जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने अभी पहले जब कॉल की कि मुझे जब रेफ्यूजी स्टेटस मिला था लास्ट ईयर, तो उसके बाद मेरी बेटी पैदा हुई थी। मुझे जुलाई में, वो सितंबर में,
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी उसको अब मैंने जैसे कन्वेंशन ब्लू जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है मुझे वो मिला है, क्या मैं अपनी बेटी के लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ या उसको भी वो ब्लू जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है उसी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? आपकी बेटी को वही स्टेटस है उसका जो आपका है, तो अगर आपको ब्लू पासपोर्ट मिला है तो बेटी को भी ब्लू पासपोर्ट ही मिलेगा। जिसको आप ब्लू पासपोर्ट कह रही हैं, इधर सर ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, शायद आप उसको रेफर करते हैं ना। हाँ जी, तो जितना आपका वीजा है ना उतना ही उसी पीरियड तक का आपकी बेटी को भी मिलेगा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है। और अगर 5 साल बाद जब नेशनलिटी मिलती है तो फिर उसका अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? वो उसका जो स्टेटस आपका है ना वही आपकी बेटी का है। ठीक है, बिल्कुल आपके साथ साथ चलेंगे जैसे वो हैं, ठीक है? जी बिल्कुल समझ आ गई, ठीक है, थैंक यू। राइट, या कैरी ऑन। Yes, so yes, they need to naturalize first before they go to the post office. So if you go to the post office and you get a form, a passport form, and you submit an application, there is every chance they would refuse it because you've not been naturalized yet. So you need to go through the naturalization process. Now, the passport itself is not what makes you a British citizen. It is a naturalization process. After the naturalization process, you are usually given a certificate. Now, if that person is a child, yes, the child does not need to attend the ceremony. But if the person is more than 18 years old, then that person is not a child anymore, in which case the person will be invited to attend the ceremony. So in this particular case, what we advise is you make a naturalization application first. Afterwards, once you get the certificate, you can then apply. I'll ask you another question before, but I'm going to summarize what you have said now. Yeah, that's fine. नाज़रीन कराम, जैसे कि आप सुन रहे थे कि हमारे पास लोग आते हैं और वो ये इस इम्प्रेशन के साथ ही बाज़-औक़ात आते हैं कि बच्चे को 10 साल इस मुल्क में हो गए हैं तो अब हमने पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो इसका जवाब ये है कि आप डायरेक्टली पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन जमा करानी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन का एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, उसकी एक फ़ीस है जो आपको पे करनी पड़ेगी और उसमें चूँकि आप बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पेरेंट्स या उसके जो भी लीगल गार्डियन हैं उसकी जगह पर वो साइन करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने की ज़रूरत होगी, जैसा कि उस बच्चे का स्कूल से अगर आप कोई लेटर ले सकते हैं, आप उसके जीपी का रिकॉर्ड लगा सकते हैं। चूँकि ये बच्चा है तो इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, उसमें एक करैक्टर एविडेंस होता है उसकी ज़रूरत नहीं है, काम का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चंद एक कागजात हैं जो कि आपको साथ लगाने होंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन जो होम ऑफिस को भेजनी है वो नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन है, ना कि आप डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नाउ अनदर थिंग व्हिच ऑफ्टन वी हियर फ्रॉम पीपल इज इट 10-year residence in this country or someone who's born in this country and lived in this country for 10 years? Well, it's not 10 years residency in this country. If you were born outside the United Kingdom and you were brought into this country, say 5 days old, for example, you weren't born here, so you don't qualify. The person should have been born in this country and the person should have lived in this country for that period of time. So it's not about just the 10 years residency, it's about being born here and residing in this country for that period of time. तो जैसे कि वजाहत हो गई इस बात की, जैसे हमारे पास पिछले दिनों भी मुझे किसी ने ये सवाल किया था कि 10 साल यहाँ रहना है या 10 साल एक ऐसे बच्चे के लिए जो इस मुल्क में पैदा हुआ है। तो सवाल का जवाब ये है कि ये उनके लिए है प्रोविज़न जो कि इस मुल्क में पैदा हुए हैं और फिर उसके बाद मुसलसल 10 साल तक वो इस मुल्क में रहे भी हैं। इसमें थोड़ा सा एक और भी पहलू है, उसको भी हम सामने लेकर आएंगे आपके, लेकिन नाजरीन को मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक ले लें, तो हाज़िर होते हैं आपके सामने ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम को देखते रहिए, आपसे फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।